topic is renewal of bill of exchange. What is renewal of bill of exchange? Sometime acceptor of bill, acceptor means drawee of bill, finds himself unable to meet his acceptance on the due date. So he may approach the drawer of the bill on or before the maturity date arrives and request him to cancel the old bill and draws a new bill with extended period. ड्रॉवी अपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो वे में रिक्वेस्ट कर सकता है ड्रॉवर को कि वे ओल्ड बिल को आप प्लीज़ कैंसिल करो और न्यू बिल ड्रॉ कीजिए विद द एक्सटेंडेड पीरियड. इट मे बी कंडीशनल और म्यूचुअली अग्रीड बाय देम. In spite of this, the drawer may charge interest for the extended period. Thus, the cancellation of the old bill on maturity in return for new bill for an extended period is known as renewal of bill of exchange. ओल्ड बिल कैंसिल करे, ड्रॉवी रिक्वेस्ट करेगा ड्रॉवर से कि वे कैंसिल कर दे, वे अनेबल है पेमेंट के लिए, उसके जगह वे न्यू बिल ड्रॉ करेगा ड्रॉवर. ये उन लोग का म्यूचुअली कॉन्सेंट रहेगा. उसके प्लेस पे ड्रॉवर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा. Regarding this, let us see the different journal entry in the books of drawer and in the books of drawee. Our today's topic is renewal of bill of exchange. Now let us see one by one. First condition और transaction आप बोल सकते हो cancellation of original bill for renewal. So what is the journal entry in the books of drawer? In the books of drawer, journal entry is drawee account debit to bills receivable account when he retained his bill. And but sometime it is not necessary. उनका बहुत सारा कंडीशन होगा, वे इंडोर्स भी कर सकते हैं, वे बैंक को डिस्काउंट के लिए भी भेज सकते हैं, बैंक को कलेक्शन के लिए भी भेज सकते हैं. तो आपका यहाँ पे डिफरेंट जर्नल एंट्री पास होगा. सो सेकेंड व्हेन इंडोर्स, तो आपका जर्नल एंट्री होगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सिस अकाउंट. थर्ड में आपका इफ डिस्काउंटेड, तो सेम ड्रॉवी अकाउंट ऑलवेज डेबिट रहेगा बट आपका जो भी क्रेडिट एंट्री है वे चेंज होगा. ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इफ डिस्काउंटेड, मैंने यहाँ लिखा है इफ डिस्काउंटेड. फोर्थ कंडीशन ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट being old bill cancel. बट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी सिर्फ एक ही एंट्री पास किया जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट being old bill cancel. Now let us see the second recording of interest receivable or maybe payable. So what happened? Drawee in the books of drawer entry will be drawings account debit to interest account being interest due. Similarly move to in the books of drawee, इसके लिए एक्सपेंस है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट ऑलवेज डेबिट होगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेबल. नाउ थर्ड आपका ट्रांजेक्शन हो सकता है होगा रिकॉर्डिंग ऑफ रिसीव्ड पार्शियली इन कैश एंड पार्शियली इन न्यू एक्सेप्टेंस एंड व्हेन इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन कैश. हाफ पैसा ड्रॉवी ड्रॉवर को देता है और हाफ का एक्सेप्टेंस लेता है और उसी अमाउंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूड रहेगा. तो व्हाट इज द जनरल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी जनरल एंट्री विल बी ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ड्यूज रिसीव्ड. No cash payment. I am not talking about cash payment. Recording of dues received fully in new acceptance. Then in the books of drawer, journal entry will be bills receivable account debit to drawee account. Here I'll mention it, students, no cash payment. So fully in new acceptance. Bills receivable account debit to drawee account. In the books of drawee, drawers account debit to bills payable account. What is their narration? Being received fully in new acceptance. And in books of drawee, narration will be being paid fully by accepting new bill. Let us see a question. Soham sold goods to Rohan worth rupees 30,000 on 1st March. बच्चे जो भी मेन पॉइंट्स है प्लीज़ अंडरलाइन. 1st March 2010
Rohan accepted. Rohan accepted means what? Rohan is drawee. And who is drawer here? Soham is drawer. Rohan accepted a bill for 3 months. Time duration 3 months. Drawn on him by Soham on 1st March 2010. On 21st May, Rohan requested that the bill is, what is the date? 21st May. Rohan requested that the bill be renewed for a further period for 2 months. Now, Soham agreed, provided 10% interest per annum. What is the rate of interest? 10% per annum. Soham then drew a new bill for the amount plus interest 10% per annum for a 2 month. On due date, bill was honored. Let us see the different journal entry in the books of Soham and in the books of Rohan. So, in date is 2010, March 1st. March 1st. What is the journal entry? In the books of drawer, Rohan's account debit to Rohan's account debit to sales account. Your amount is 30,000. Being goods sold on credit basis. Now move to in the books of Rohan. Rohan means drawee. Journal entry will be same. Date will be same. 2010 March 1st. 2010 March 1st. What is the journal entry? इसने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू Soham's account. To Soham's account. What is the amount? Same amount, 30,000 and 30,000. Being goods purchased on credit. Now move to the next. Rohan accepted a bill for 3 months drawn on him by Soham. So what is the here entry? Acceptance received at the 3 month. So same date will be the same. Bills receivable account debit. Bills receivable account debit to Rohan's account. What is the amount? 30,000. 30,000. Being acceptance received at 3 months. In the books of drawee means in the books of Rohan date will be same. What is our entry? Soham. Soham's account debit to bills payable account 30,000 and 30,000. Now what is our next next line? On 1st March 2010. On 21st May, Rohan requested that the bill be renewed. Bill be renewed for a further period of 2 months. So what is the date here? May 31st. Now May 21st. May 21st. What is our journal entry in the books of drawer? Rohan's account debit to Rohan's account debit to bills receivable account. Amount is 30,000. 30,000. Being old bill cancel. In the books of, what is the date here? Date will change. May 21st. Bills payable account debit to Soham's account. Same amount. What is the here narration? Being old bill cancel. Now on 21st May, Rohan requested that the bill be renewed for further period of 2 months. हम लोग ने ये एंट्री किया. अब न्यू बिल आपका रिन्यू हो रहा है. रोहन रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 मंथ. तो व्हाट इज आवर जनरल एंट्री? बिफोर दैट इंटरेस्ट का आपको एंट्री करना पड़ेगा. तो सेम इन मे 21st आवर जनरल एंट्री इज फॉर इंटरेस्ट. Rohan's account debit to Rohan's account debit to interest account. The amount is 500 and 500. 10%.
here is a given. Now in the books of Drovey, what is the journal entry? Date is same. इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सोहम्स अकाउंट, अमाउंट इज 500. Now move to the next line. Here is the given. On 21st May, Rohan requested that the bill be renewed for a further period of 2 months. Sohan agreed, provided 10% interest per annum. Again, Soham then drew a new bill. So, what is our journal entry? May 21st only. Our journal entry in the books of Drovey, in means in the books of Soham, our journal entry will be bills receivable account debit to Rohan's account. एंट्री क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन्स अकाउंट, रोहन्स अकाउंट. यहाँ पर आपका इंटरेस्ट अमाउंट में बिल में इंक्लूड रहेगा, तो आपका बिल कितने का रहेगा? 30,500 एंड 30,500. नाउ इन द बुक्स ऑफ रोहन, डेट विल बी सेम. Soham's account to bills payable account. Soham's account debit to bills payable account. आपका अमाउंट क्या रहेगा? 30,500, 30,500. Now after this is bills receivable to Rohan account, and in the books of Rohan हमने किया Soham's account debit to बिल्स पेबल अकाउंट. नाउ 2 months मीन्स आपका जुलाई 24, डेट आपका ड्यू डेट होगा जुलाई 24. कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 30,500, 30,500. In last line you read one time again. Here is the given. Soham then drew a new bill for the amount plus interest 10% per annum for 2 months. On due date bill was honored. So here is the narration will be being cash received on maturity of new bill. Now move to in the books of Drovey. Now what is the journal entry? Date will different, July 24. Bills payable account debit to cash account 30,000. बिल ऑनर्ड हुआ है तो पूरा अमाउंट हम लोग दिखाएंगे 30,500. Thank you students. I hope you understood the different journal entry regarding renewal of bill of exchange. If any queries, please comment down in the video.